So actually, it is the name, as you said, it is the name of that particular institute. Sometimes some student they assume कि ये मिनेसोटा नाम का कोई ऑथर है और उसी ने ये टेस्ट ये डेवलप की है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल. वहां पे ये टेस्ट ये बनाई गई है. सो द नेम इट इज गिवन मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी. Now this particular test, it has very it is highly significant, highly important from all the angles. High profile वाली टेस्ट तो है ही, but another thing is now अब अगर कॉलेज आज से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन द मंथ ऑफ इन जैन एंड ऑल्सो, तब अगर हमारी एग्जाम है और रूटीन में अगर ऑफलाइन वाले पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव, देन फ्रॉम थर्ड चैप्टर दिस विल बी वन ऑफ द टॉप 3 टेस्ट विच 95% they are going to ask for broad question. Explain in detail MMPI with its diagnostic application. ये 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन. 4 क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन ये ब्रॉड क्वेश्चन के लिए होगा. सो 10 10 10 10, so 10 into 4 40, and then 5th question it will be write any 2 short notes out of 4. उसमें अगेन हर एक चैप्टर में से कोई ना कोई एक एक 2 पॉइंट्स वहां पे होंगे. सो लाइक दैट वो एक 50 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम आपका होगा, एंड देन इंटरनल तो है ही. So far, almost every year, even for repeaters group, they have frequently asked this test, MMPI. And that too with its diagnostic application. Because हम अभी diagnostic पढ़ रहे हैं. As you rightly said के उसकी reliability क्या है, उसकी validity क्या है, other 10 scales or some additional scale, ये सब एकदम basic information हो गई जो मालूम होनी चाहिए. But even apart from that, diagnostic view, it is most expected. So to start with it, now just tell me, as you people have gone through with STI and even NEO-PI, how do we study someone's personality? किसी के अगर पर्सनैलिटी का हमें स्टडी करना है तो किस तरीके से, या फिर by which means we as a psychology student we can study someone's personality? Yes, tell me. Sampada, Shivani, Shivam, any guess? रिसर्च में भी हुआ होगा आपका इन पार्ट 1. Okay, fine. Basically, as Alport, he defined personality that dynamic way. Personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determines his characteristic, behavior, and even thought. R.V. Cattle, the way he defined personality means a kind of prediction that how a person will behave in a certain given situation. As the 4 goals of psychology says the same के हाँ prediction ये psychology का main objective या फिर goal है, the prediction about how a person will behave. So this is what it is, personality. ये क्यों discuss कर रहे हैं? Because MMPI, that concept, personality means what? ये diagnostic point of view से understand होना, clear होना, it is very important. So to be precise, personality means reactivity and characteristics or ways of regulating our thoughts, regulating our emotions, regulating our actions, our moods, or everything.
some people are good in self-regulation and some people are not. So those who are not, we call it that they are impulsive in terms of NeoPI. NeoPI मध्ये तो एक सब फॅसेट आहे की इम्पल्सिव्ह आहेत काही, especially in N factor, like that. So all these are the ways to study, to understand, to evaluate someone's personality. The first thing is case study. In detail understanding, in detail investigation, in detail data gathering of one particular single individual is what is case study, which you are going to do in 4th sem. अभी जैसे प्रैक्टिकल है वैसे 4th आपका जो एक पेपर होगा वो होगा केस स्टडी. एट दैट टाइम you are going to assist to some counselor, some psychologist or some psychiatrist, और फिर उधर जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट्स या फिर पेशेंट्स आते हैं उनका इन डिटेल स्टडी. सो थ्रू दैट ऑल्सो वी कैन स्टडी समवन्स पर्सनैलिटी इन डिटेल. Second thing is personal interview. By having formal, informal questions, close-ended, open-ended questions. So इंटरव्ह्यू मधून सुद्धा आपण पर्सनॅलिटीचा बराचसा डीप मध्ये स्टडी हा करतो किंवा करू शकतो. Another thing is self-report. How far the person is able and willing to express himself. Then some particular projective instruments like Rorschach ink blot test. Even we have TAT, thematic apperception test. That TAT test, it is still used even in military recruitment किंवा पर्सनल सिलेक्शन मध्ये सुद्धा TAT यूज करतात. Human figures are shown on some cards, pictures, and then last card, it is totally blank. अगदी व्हाईट कार्ड असतं ते, आणि मग तेव्हा आपण काय आणि कशी स्टोरी करतो. सो तो सगळं जिस्ट एकूण हे प्रोजेक्टिव्हचं आहे. इवन फॉर चिल्ड्रन इट इज CAT, लाईक दॅट. टू ऑब्झर्व हाऊ चिल्ड्रन प्ले, द काइंड ऑफ टॉक दे हॅव. लहान मुलं जेव्हा खेळतात तेव्हा ते स्वतःशी, इतरांशी काय आणि कसं बोलतात, त्या बोलण्यातून सुद्धा एकूण पर्सनॅलिटीचा अंदाज आपल्याला हा तिथे नक्की येतो. एंड देन इवन लाइक गजनी पिक्चर में, मतलब एक जैसा है कि आमिर खान की डायरी जब वो रिपोर्टर या फिर वो एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि वो क्या कैसे हुआ राइट फ्रॉम डे 1, like this. So in addition to all these things, one of the most scientific, most appropriate and frequently used, especially in clinical setting, that is inventories. So we have personality inventories, MMPI, NeoPI, like that. In total, all these are the scale. Of course, all these are only basic scales because it was added only in MMPI 1. But in our syllabus, we have MMPI 2. MMPI 2, it is the latest version. ये 10 स्केल क्या है ये डिटेल में मालूम होना, it is very very important, because in detail understanding of these scales is going to help us in our 4th chapter when we are going to learn how to write a report. Plus restructured clinical scale, current MMPI 2 जे आहे, so again they have updated all these things. So demoralization, somatization, low positive emotionality, cynicism, antisocial, all these things. Content scales are there. So नाम से ही पता चलता है कि content मतलब क्या है. So if we go statement by statement, definitely we as a part 2 student, we can have that particular case के हाँ इस statement से क्या मेजर हो रहा है. Tomorrow we are going to study some of the reports and even some of the statements and how they have mark. So content scale मध्ये anxiety, fear, obsession, depression. Of course it is clinical scale. So म्हणून सगळे ते एकूण problematic किंवा disorder वाला content हा या सगळ्या scales मध्ये आहे. Family problems, work interference and everything. And plus all these things. Psychological 5 scales: aggression, psychoticism,
disconstraint, negative emotionality, introversion and low positive emotionality, everything. जेंडर रोल से रिलेटेड भी है बिकॉज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम का एक अलग डिसऑर्डर है कॉल्ड एज GID. Some children, they have a different gender orientation compared to their natural gender. 4 साल का लड़का है बट उसके जो इंटरेस्ट है, उसके जो हॉबीज है, उसका जो एक पर्टिकुलर प्रेफरन्स है, इट इज टोटली अबाउट गर्ल्स. आपण मुलींसारखा फ्रॉक घालू, आपण मुलींसारखे केस ते नीट करू किंवा कानातले घालू किंवा नाकातले घालू वगैरे वगैरे सगळं. आणि इवन वाइस वर्सा, लड़की है लेकिन इंटरेस्ट इवन ड्रेसिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग इट इज. आणि मग आपण एज अ ले पर्सन काय म्हणतो की ये पूरा टॉम बॉयश इसका नेचर है. सो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, हाउ फार इट इज एक्चुअली ओनली अ डिसऑर्डर या फिर सिर्फ इंटरेस्ट है ऑल्सो. तो ये सब कुछ यहाँ से मेजर होता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज हाईली वैलिड, हाईली रिकमेंडेड टेस्ट. एक ही टेस्ट एडमिनिस्टर करो लेकिन काफी सारा कंटेंट आपको मिलेगा. Of course, it is costly, so it is mostly used in hospitals setup. किंवा काही अगदीच रिनाउंड सायकॅट्रिस्ट वगैरे असतील आणि खूप मोठा सेटअप वगैरे आहे, खूप मोठं कोणीतरी सायकोलॉजिस्ट वगैरे आहे, सो तेव्हा हा पार्ट सगळा येतो. इन दैट ऑल्सो दे हैव 2 टाइप्स ऑफ स्कोरिंग. हैंड प्रेफरेंस मतलब एक रेगुलर स्कोरिंग जैसे हम PY या फिर MA पार्ट 1 में करते हैं, लाइक एक टिपिकल मैनुअल स्कोरिंग. एंड नाउ डेज अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सो दे हैव इवन सॉफ्टवेयर. NeoPI का भी सॉफ्टवेयर है, MMPI इट इज इन सॉफ्टवेयर फॉर्म and so. Now tell me, so what you can make out of these 2 statements? I am about as able to work as I ever was, and if I were an artist, I would like to draw flowers. If a person mark true, then it reflects what, and अगर false है तो उससे क्या reflect होगा वगैरह वगैरह. अरे हाँ, सॉरी, आई आस्क, MA पार्ट 2 के बच्चे बोलते नहीं है ना. नहीं बोलते ना पार्ट 2 के स्टूडेंट्स. MMPI 2 basics. For MMPI 2, author is Bachar and other group, but for MMPI 1, McKinley and Hathaway, these 2 people initially they have developed this test in 1942, and second version they have published in 1989. How many statements are there in MMPI 2 for MCQ? They may ask. अगर MCQ में टेस्ट होती है तो, एग्जाम होती है तो. If it अगर ये डिस्क्रिप्टिव में ही आती है, then we are going to write as we have written our or given our exams, like FI ला जसा आपण केलं होतं तसंच डिस्क्रिप्टिव्ह आणि त्या सगळ्या मोठ्या लार्ज स्केल मध्ये रेग्युलर एक्झाम कदाचित एक्सपेक्टेड आहे आता. This timing also most important for diagnostic markers. Administration time. If in the manual, because it is a standardized test, so if they are saying that generally it takes 90 minutes to answer all these 567 items, so 90 का अगर 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, it is absolutely okay, easy to understand. But too much time taken factor, it leads to many multiple possible diagnostic implications. ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो क्या क्या, वो डिस्कशन से बहुत कुछ हो सकता है, but it's okay, up to you.
Then let's have quick overview on scale 1. These things I'm sure you are going to study in detail in your patho. हायपोकोंड्रियासिस असेल किंवा डिप्रेशन, म्हणजे काही पण आपण बीडीआयच्या वेळेस सुद्धा तो भाग सगळा रेफर केला होता किंवा डिस्कस केला होता तसा. Hypochondriasis. So these are those people who do डॉक्टर शॉपिंग. म्हणजे कुछ लोग कैसे होते हैं कि वो ऐसे मॉल में जाएंगे लेकिन विंडो शॉपिंग करेंगे. परचेस वगैरह तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ ये देखना, फिर वो देखना, फिर ये सेक्शन, फिर वो सेक्शन. आधी सीसीएमला खालती जे काही असं टेक्नॉलॉजीचं आहे मग ते फक्त बघायचं, मग नंतर ड्रेसिंगचं बघायचं. परचेस वगैरह बाकी का कुछ भी नहीं करना, लेकिन सिर्फ डिस्कशन करते रहना. इसका रेट कैसा है, उसका रेट कैसा है, ये क्या है, वो क्या है. The same pattern we can found in these people, hypochondriasis. So these are those people who just over exaggerate their minute physical symptoms. For example, in real, they do have just a cough. फक्त खोकला होतोय, पण ही ती माणसं आहे. एक तर इंटरेस्टिंग पार्ट आणखीन असा की वो खुद डायग्नोसिस करते हैं कि दैट इट मस्ट बी अ थ्रोट कैंसर, एंड विद दिस पर्टिकुलर सेल्फ क्लेम डायग्नोसिस दे गो टू डॉक्टर एंड दे विल टेल की अहो डॉक्टर जरा चेक करा, बघा की मला थ्रोट कॅन्सर तर नाही ना झालंय, मला असं वाटतंय, रादर आई स्ट्रांगली बिलीव कि हाँ मुझे थ्रोट कैंसर ही है, बस आप चेक करके ऑफिशियल आपका रिमार्क चाहिए. डॉक्टर ऑल्सो इंसिस्ट कि इतना कुछ नहीं है, सिर्फ खांसी है, सिर्फ कफ है, बट दे अगेन इंसिस्ट की नहीं तुम्ही मग ते असं काहीतरी लिहून द्या ना की ही टेस्ट करा, ती टेस्ट करा, वगैरह वगैरह. जेन्युइन डॉक्टर क्या कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम क्यों लिख के देंगे. उसमें भी अगर किसी डॉक्टर ने लिख के भी दिया तो भी रिजल्ट तो मतलब यह है कि है ही नहीं थ्रोट कैंसर, कारण की ते एक्चुअली नाहीच आहे. बट दीज पीपल आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ दिस एव्हिडन्स. They will visit to second doctor, then third, then fourth, and then fifth, like that. Because satisfaction is not there. उनको जो डायग्नोसिस चाहिए वो डायग्नोसिस वहां से उनको मिला ही नहीं. Apart from that, clinical features जर आपण ऑब्झर्व केले, because all these things are going to important for us when we are going to write some report मध्ये. फॉर एग्जाम्पल, इनसे अगर हमने इंफॉर्मेशन भी ली या फिर इनके रिलेटिव से भी ली, इवन इन फ्री टाइम दीज पीपल विल नॉट have some kind of entertainment shows or movies or anything. ते फ्री टाइम मध्ये सुद्धा काय करतील, काहीतरी फॅमिली डॉक्टर सारखे काहीतरी शोज बघतील किंवा वाचतील किंवा काही हेल्थ कन्सर्न असेल अशाच टॉपिक्स वरती डिस्कस करतील अँड एव्हरीथिंग. So the term is there, hypochondriasis. They have very, very high concern about illness and disease, which is actually in real, it is not. They are very, very critical about others. And minutely, if we study psychology of these people, they express their hostility inwardly, not outwardly. Hostility, the same factor we can address, we can study in NeoPI. Anger hostility म्हणून एक सबडोमेन किंवा सब फॅसेट त्याच्यामध्ये आहे. सो इन दिस वे वी कैन हैव इवन क्रॉस चेक कि अगर हमने किसी पेशेंट को MMPI भी दिया और NeoPI भी दिया तो आतले काय कोरिलेशन्स येत आहेत, सो त्याच्यावरून सुद्धा डीप स्टडी हा होतो और होऊ शकतो. Second, it's again scale 2, easy to understand. We know its symptoms, signs, features. आणि हे आधी जसं म्हटलं की स्केल्स बद्दल मी आणखीन जास्त डीप मध्ये आता का जात नाही, बिकॉज तो पार्ट तुमचा पॅथोमध्ये ऑलरेडी होणार आहे, कव्हर किंवा होतो आहे. इव्हन बीडीआयच्या वेळेस सुद्धा आपण सगळे सिम्पटम्स ऑलरेडी हे
एकूण डिस्कस केलेले आहेत की क्राईम स्पेल आहे, अननेसेसरी वेट गेन अँड वेट लॉस, निगेटिव्ह फिलिंग आहे, सेल्फ हेट्रेट आहे, वगैरे वगैरे. हिस्टेरिया, हिस्टेरिया का एक बेसिक एग्जांपल एंड रियल केस स्टडी वाज लाइक सम 15 years बैक और सो, 15 या फिर शायद 20 साल पहले की भी अगर बात होगी. यू मे डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. उस वक्त ऑल ऑफ अ सडन एक शाम को ऐसे न्यूज एकदम रूमर, इवन न्यूज में भी थी, डीडी के न्यूज पे वो न्यूज थी, ऐसा था. सिर्फ ऐसे पब्लिक सॉरी ऐसे प्राइवेट न्यूज चैनल पे वो न्यूज थी, ऐसे नहीं. वो न्यूज क्या थी कि हाँ, गणपति बापा दूध पी रहे हैं. हर किसी के घर में वो जो एक गणेश जी की या फिर ये गणपति भगवान जी की जो है मूर्ति, उसको अगर आप एक चम्मच में ते सोंडेपाशी जर का आपण चमचा नेला तर गणपति दूध पितो, ही बातमी होती. किसी दूसरे का सुन के हर किसी ने अपने घर में वो ट्राई करके देखा. लिटरली ये हुआ था अपने इंडिया में. हिस्टेरिया. So those people who have this feeling or this particular factor, they are just overwhelmed. आजू बाजू के लोग अगर बहुत चिड़चिड़, बहुत गुस्सा, so now you can see कि hysteria. This can be another reason that why people get more aggressive in riots. आजूबाजूला काय चाललंय, आजूबाजूची लोक कशी वागतात, मग आपण पण तसंच वागायचं. So people do engage themselves, those who are psychologically weak, they do engage themselves in such activities or in such actions. They are overwhelmed. They avoid responsibility by developing physical symptoms. And that's why Sigmund Freud, in his theory, he said that to some extent defense mechanism, it is good because it protects our ego. But at the same time, he has also said that excessive use of defense mechanism leads to abnormality. So developing physical symptoms for what? Avoiding responsibility. This is not good for our psychological health. And so headache, stomach discomfort, chest pain, everything. Where original cause कुछ भी नहीं है, organic cause ऐसा कुछ भी नहीं है. But they are just developing these feelings. अरे नहीं, आज डोकं दुखतंय, आज हे होतंय, आज ते होतंय, to avoid the responsible task. So those who score high on this particular scale, they have exaggeration of denial as a defense mechanism, as I said, somatization, dissociation, immaturity, low levels of insight, and all these things. Then psychopathic deviate. In second term of your psychopathology, you are going to study antisocial personality disorder in cluster B. एक चैप्टर ऐसा होगा आपका कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे. एंड इन दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटीसोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो इट इज रिलेटेड विद द सेम बिकॉज डेविएशन, साइकोपैथिक डेविएशन. The basic feature of these people is they are extremely rebellious. Under DSM for antisocial personality issue, key characteristics किंवा key features काय आहे तर lack of remorse and lack of guilt. These people do not have any kind of guilt or shame, regret for what they are doing. Like terrorist. काय ऍक्टिव्हिटी आपण करतोय, काय त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस आहे, हाऊ फार इट इज डायरेक्टेड आणि एम काय आहे वगैरे काही नाही. बस करणं आहे तो करणं आहे. कुठेतरी उगाच मग तसं बॉम्ब प्लॅन करायचं आणि ऍट रॅन्डम शूट करत राहायचं. सायकोपॅथिक डेव्हिएट. Because these people have difficulty incorporating values and standards of society
the norms, rules, regulation which has been set by society, these people are not happy with that. They find it difficult to follow all these things. So these people engage in antisocial and asocial activities. सोप्या मराठी भाषेत आपण त्याला समाज विघातक कृत्य असं म्हणू. If we take some other case history in detail, frequently we may find that these people have stormy interpersonal and family relationships. Stormy, किया तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं तो एकदम पूरा उलटा. आजपासून तोंड नाही बघणार, नाहीतर तुझ्याशिवाय दुसरं कोणीच नाही माझ्यासाठी, हे असं एकदम टोकाचं वादळी. And family issues, constant hatred, violence, disputes, abusive words, harassment, exchange of extreme, unwanted, unexpected things, ideas, and everything. And most of the time, these people are underachiever. So to some extent, there is a relationship between education and crime. The more you are educated, there is a less tendency to engage in antisocial activities. Because काहीतरी शिकल्यावरती आपल्याला पण एकतर तो अवेअरनेस, अलर्टनेस हा डेव्हलप होतो, आणि ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट किंवा जॉब ओपनिंगला स्कोप आहे. लेकिन एजुकेशन ही नहीं है तो फिर वो एक एक डेविएट होता है आगे. So poor planning, judgment, and all other things. This particular scale, it is not a clinical scale. इथे मेंशन केलंच आहे that it is a non-clinical scale, but it just gives us an idea, masculinity and femininity. अभी तो लॉ की भी बात अलग है की लॉ ने सुद्धा ते एक्सेप्ट वगैरे एक एक केला आहे, लाईक जेंडर प्रेफरन्स किंवा इंटरेस्ट असेल तसं. बट that acceptance, it is most important for that particular person. सोसाइटी के लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है ये अलग बात है. So high score for men reflects lack of stereotypic masculine interest, aesthetic and artistic interest. And for women, it is uncommon. Usually, it is the indication of rejection of traditional female role. Now, I can just mention, but I expect you to refer these things if you are truly willing to have a good career in this field. Please refer Carl Jung's theory of personality, archetypes, anima and animus, yin-yang circle. That personality theory and this particular concept of femininity and masculinity, it is very much related. So तो सगळा थेअरीचा बेस इथे आपल्याला खूप मदत करतो जेव्हा आपण ऍक्च्युअली पेशंटला हँडल करतो, डील करतो, इंटरॅक्ट करत असतो, असेस करताना, डायग्नोज करताना. सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. Scale 6. Again, pathos part. One of the core symptoms of schizophrenia. Paranoid or paranoia. That means being suspicious, doubtful. कोई भी चीज अगर होती है वो अपने लिए या फिर अपने अगेंस्ट में ही होती है. संशयखोर वृत्ति ही मनोविकृति है. कंसर्न होना अलग बात है, अवेयर रहना अलग बात है, एंड सस्पिशियस रहना, इट इज टोटली डिफरेंट शेड. So paranoid symptoms in the sense like ideas of reference, feelings of persecution, the grandiose self-concept, suspiciousness. And why some people, they become too much, paranoid? Because they are too much sensitive. Psychologically, these people are very, very sensitive. रत्नागिरी में
एक मेंटल हॉस्पिटल है, उस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट था. आयडियाज ऑफ रेफरन्स, आयडियाज ऑफ ग्रँडिओस, असे सगळे हे वेगवेगळे स्किझोफ्रेनिया मधलेच हे शेड्स आहेत सिम्पटम्सच्या रेफरन्सने. So that particular patient, he was in his own delusion, hallucination, that he used to assume himself as शिवाजी महाराज. मग वॉर्डबाय जेव्हा काही असं मेडिकेशन्स किंवा काही हे द्यायला घ्यायला यायचा, ही यूज टू से, तानाजी इकडे ये, सूर्याजी तिकडे जा, असं करा तसं करा. नर्स अगर आते थे, ही यूज टू से, हा जिजाऊ माता मी तुम्हाला मुजरा करतो अँड ऑल. आयडियाज ऑफ रेफरन्स. ग्रँडिओस सेल्फ, आय एम द मेसेंजर ऑफ गॉड. देवाने मला पाठवलंय, मी आता असं करणार, मी तसं करणार, हे जग बदलून टाकणार, कोविड मी पुसून टाकणार, वगैरे वगैरे वगैरे. And paranoid, another shade of this particular trait or scale is being too much suspicious, even when there is not a single point for evidence. कितनी भी छोटी सी चीज हो, कितनी भी वेरी वेरी माइन्यूट एस्पेक्ट कुछ हो, there is zero. These people are always doubtful. ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने जानबूझ के किया, आपका तो यही थॉट था कि मुझे मारना है, वगैरह वगैरह. As in earlier lecture, we have seen the importance of statistics for diagnostic purpose. सो मग नंतर मॅन्युअल मध्ये हे पण एक सगळा पार्ट आहे कि कितना स्कोर होगा तो फिर इसकी टेंडेंसी और ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, वगैरह वगैरह. As per Sigmund Freud's theory, why people become suspicious about others, because it is nothing but the use of defense mechanism. Projection. तुमने ऐसे किया, तुम ये सोच रहे थे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा था, इसलिए हमारे साथ ये हुआ. The person is not ready, is not able to accept the reality as it is, but rather he is just projecting his feelings towards others. Projection. तुम्ही मला मारण्याचा प्लॅन करत होते, तुमच्या मनात असं आहे की मी नकोय किंवा मी जगायलाच नको, आणि म्हणून तुम्ही असं केलं, वगैरे वगैरे. Of course, easy to understand that why these people have very poor scope in therapy, because these people are even paranoid about therapists. तुम्ही का बरं असं सांगताय, तुम्हाला दुसऱ्यांनीच असं कोणीतरी सांगितलंय आणि म्हणून तुम्ही माझ्याबद्दल असं असं बोलताय. आप क्यों हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए. आपण कितीही चांगलं प्युअर ऍक्च्युअल काउन्सिलिंग करू, यांच्या डोक्यात तेच की आपण त्यांचं ब्रेन वॉश करतोय, वगैरे वगैरे. सो म्हणून मग तिथे तेवढं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन, इन्व्हॉल्वमेंट, बिंग अ क्लायंट ही या ग्रुप कडून नाही मिळणार आपल्याला. सिमिलर टू दॅट, स्किझोफ्रेनिया, delusion, hallucination, even disturbed thought, speech, all these are the symptoms. Apathy आहे, asociality वगैरे वेगवेगळे सिम्टम्स आहेत. स्किझोफ्रेनिया ये पैथो में भी है, एंड इवन as I mentioned about personality disorder, schizoid personality disorder, schizotypal personality disorder, and paranoid personality disorder. All these three disorders, they are a part of cluster A personality disorder. तो कोई अगर एक टॉपिक जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, फॉर एग्जांपल पैथो, आपका डायग्नोस्टिक का कुछ पार्ट कवर होगा, एंड वाइस वर्सा. If you study diagnostic well, it is going to help you in patho. Hypomania, another scale. Mania and hypomania. Mania is the another side of depression.
डिप्रेशन में जो जो सिम्टम्स है उसका पूरा रिवर्स में मैनिया के सिम्टम्स है. Individuals experiencing hypomanic or elevated mood and they have accelerated speech. इतकं घाई 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 बोलतील because they are in that particular zone, in that particular thought only. These people, they are prone to get irritated easily. They have flight of ideas, and in between they also experience frequent periods of depression. In the manual they have also given के T score कितना होगा तो ये डिग्री ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है and other things, but otherwise apparently these people are very very friendly, pleasant, enthusiastic, because of course they are energetic. When our thoughts, moods and action continually अगर उसमें fluctuation से, ups and downs से, it is not good for our psychological health. Once in a while कभी कभार लो फील करना, it is absolutely okay. एक आध 2 महीने में एक आध दिन के लिए अगर ऐसा हमें लगता है, it is okay. But एक हफ्ता एकदम डिप्रेस, एक हफ्ता एकदम अग्रेसिव एंड ऑल, एक हफ्ता एकदम अगेन लो, इट इज लाईक आपलं वजन एका आठवड्यात कमी होत आहे, एका आठवड्यात पुन्हा वाढतंय आणि मग नंतर परत काहीतरी होत आहे. सो त्या रेफरन्सनी ते म्हणजे सगळं जसं फिजिकल हेल्थ मध्ये आहे अगदी तसंच हे सायकोलॉजिकल हेल्थ मध्ये पण इक्वली ऍप्लिकेबल आहे. अँड लास्ट स्केल दॅट इज सोशल इंट्रोवर्जन. Again, like that fifth scale, this is also a non-clinical scale. It just reflects about your introversion and extroversion nature. Being introvert, it doesn't mean that something it's abnormal. अगर कोई shy है, reserve है, easily express, it's unable to express his or her thoughts easily, it is not a problematic unless and until it is affecting personal, social, and occupational functioning. So it just gives us insight about overall psychological nature. And then we have some other skills like validity and Mavrin, train, as she said, खुशी की lie scale है. K stands for correction scale. All these points are very very important for again conceptual understanding, because MCQ में अगर टेस्ट होती है तो ही या एका टेस्ट मधून कमीत कमी 60 ते 70 MCQs इझिली फ्रेम होतील. सो सेटनेट किंवा पीएचडी एंट्रन्स साठी सुद्धा जे प्रिपेअर करतायत सो त्यांच्यासाठी सुद्धा MMPI इट इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड कन्सेप्च्युअली अँड अदरवाइज ऑल्सो रेग्युलर स्टडीला पण हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. अँड रिमेनिंग पार्ट दॅट इज एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड इवन सम आइटम्स, कुछ रिपोर्ट्स के भी कुछ पॉइंट्स है, तेव्हा आपण स्टेटमेंट वाइज मग एक एक करून हे पुढे डिस्कस करू. ओके. Yeah.